Hello and welcome, ladies and gentlemen. Welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. I have to say, आप दोनों को पता नहीं होगा, but me and my director, we have been changing the script every 5 minutes. कभी इधर, कभी उधर. But bottom line is the best team has won for today, and that has been Chennai. And we have to talk about MS Dhoni. But what a game, Nikhil! Wasn't it a very interesting game? आपको नेचुरल मैनिक्योर मिला कि नहीं मिला? नेल बाइटिंग फिनिश रहा कि नहीं रहा? You know what? Honestly, I would have eaten them, but I was. ये कितने अच्छे हैं, खा लेती तो. See, but the difference is, the fantastic part is this game fought between the two champion side. मतलब दो दिग्गज टीमें जो आमने सामने 9 ट्रॉफीज दोनों टीमों के बीच में. ये 150 रन की चेस ने ऐसा लग रहा था 210 215 रन की चेस है. विकेट्स गिर रही थी, उसके बाद लगातार वो प्रेशर बनता नजर आ रहा था. वो एक छोटी सी साझेदारी हुई, अंबाटी रायडू और फिर शिवम दुबे आउट हुए. उसके बाद अंत में जब महेंद्र सिंह धोनी आए तो बहुत सारे रन थे. फिर प्रिटोरियस ने आके उनका काम थोड़ा सा हल्का किया. फिर अंत में आखिरी ओवर में 18 रन. और वो आपको आई थिंक कौन सा मैच था जब चेन्नई राजस्थान के खिलाफ खेल रही थी और आखिरी ओवर जयदेव उनाडकर डाल रहे थे यार. चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी फिर से जयदेव उनाडकर के पीछे पड़े थे और आज भी हुए. जब वो 18 रन नजर आए ना, मैंने कहा ये अगर सिर्फ स्लोअर बॉल डालने को देखेगा तो आज फिर इनके लिए दिक्कतें रहेंगी. महेंद्र सिंह धोनी रीड्स देम लाइक अ बुक कि कहां डालने वाले हैं और किस तरीके से वो प्रहार करने को देखेंगे. अनबिलीवेबल. ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग गेम्स. They don't call him MSD for no reason. I just feel also कि हमने लिखा था पहले कि चेन्नई जीतेगी, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, and then eventually you were just like, they deserve to win. There was some, we didn't have to write it. We could just see what was happening. Okay, but करिश्मा, 70. हाँ. सॉरी मैं कह रहा हूँ, सॉरी जस्ट टू बट इन देयर. तभी तो कहते हैं ये विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग इसीलिए है. अंतिम गेंद तक पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा. Bilkul. That's the beauty of T20. So, Wasim, 7 defeats in a row for Mumbai. First time a team has lost 7 in a row in a tournament. It's actually disheartening to even say this, but yeah, I mean somebody who's been the most successful team, Karishma, yes. उनके लिए उनके पास ये record है. So that is a very disheartening thing. But I think they played, first of all, I think both the teams played like the El Classico that we talk about of the IPL. They played this game like that. The last ball tak match tha, but unfortunately Mumbai, lost in the last ball, and MSD was the deciding factor. If anybody else other than MSD were batting, you could take it that Mumbai Indians were going to win. So MSD was the difference. There's no doubt about it. 13 ball 28. And how cool he was in that last over. With 14 and 15, he knew, like Nikhil said, he reads him like a book. क्या है वो slower ball डालने वाले हैं. If at all I can criticize, जयदेव उनाडकर, जो last 2 ball उन्होंने डाली, जो यॉर्कर डाली, he could have gone for that in the first 2 or 3 balls. He might have gone off strike. But anyway, उस time पे आपका दिमाग चलता नहीं है when you are high under pressure. और जब सामने ऐसा बैट्समैन है जिसने आपको इससे पहले भी मारा हुआ है, तो तब आपकी थोड़ी दिमाग की बत्ती ऐसे भी नहीं चलती है. तो I feel sad for Mumbai Indians. I feel sad for Unadkat, but what a innings by MSD. Fantastic. Absolutely. We have a new segment on our show which is called Turning Point. So what was the turning point in the game? And I have to find out from my experts. Let's just take a look. देखिए, Nikhil, मेरे लिए करिश्मा, मेरे लिए बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी. वो 18 रन आखिरी ओवर में, शायद कोई और होता जैसे वसीम ने कहा ना, तो मैं मानता हूं कि वो मुश्किल होता. लेकिन वो आखिरी ओवर जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए आखिरी 3 ओवर में, मेरे लिए वहां से गेम वो घूम गया. शुरुआत में मुंबई लड़खड़ा रही थी, 3 विकेटें गिर गई. फिर वो तिलक के 51 रन बाद सूर्य कुमार यादव के डेब्यूटेंट ने सिर्फ बैटिंग ही अच्छी नहीं की, बॉलिंग भी अच्छी की. ऋतिक शौकीन ने, उन्होंने अपने 4 ओवर बहुत ही आराम से निकाल दिए. विकेट नहीं मिली, उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए जिसमें 1 चौका
वो जो मिसफील्ड पे गया था और एक छक्का लगा, ही बोल्ड रियली वेल, बट डैनियल सैम्स की अच्छी वापसी रही, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि आप मुकाबले को खत्म नहीं कर पाए। महेंद्र सिंह धोनी वो आखिरी ओवर में 18 रन बनाना, 14-15 आप कहते हो चलिए ठीक है, बैटिंग साइड को ना यू से कि Yeah. इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो बैटिंग टीम की तरफ हो जाती है। उसके बाद हर एक रन जो है वो फिर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं कि इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां से मैच को जिताना मेरे लिए हैट्स ऑफ टू टू द मास्टर, टू द गेम फिनिशर। Absolutely. Wasim, आप भी agree करते हो that this was the turning point of the game? I think so. I think MSD was the turning point मेरे हिसाब से. And if I can be a little bit more critical, I would say Bumrah not bowling the last over. Sometimes I feel the captain or even the the franchise, they put too much pressure on that 19th over. But to bowl Jaydev Unadkat the 18th over and the 20th over, sometimes I feel it's a bit too much when you've got Bumrah. You have to probably think of him bowling the 20th over. Even if 10 or 12 needed, you would back Jasprit Bumrah to do the job. So maybe hindsight, we all can speak on the hindsight, but Yeah. I feel Jasprit Bumrah not bowling the 19th or 20th over, sorry, was the difference. And MSD, how relaxed he was. He knew, he's going to falter in his length, and he's going to go for the slower one, जो उनकी strength है, and he reads it like a book. और जब आप 18 रन का ओवर डालते हो करिश्मा, and the first second ball goes for a boundary or a six, then the pressure is on the bowler, and MSD plays on that. He knows to put the bowler under pressure, and he got the six of the first ball, and Jaydev Unadkat was under pressure after that. Yeah, well, always in a zen mode is MSD, a monk with a bat, so to speak. Chalo baat karte hain about Chaudhary. What a first over by Chaudhary, second game in a row. Now that he is struck in the first over, wickets of Gill from the last game and Rohit and Ishan in this one, which was a great, great, great impact. Let's talk about that, Nikhil. करिश्मा, आज तो आप कह सकते हैं लेफ्ट वाज राइट। 3 विकेटें मुकेश चौधरी ने निकाल दी और फिर डैनियल सैम्स ने आके वो 4 विकेटें निकाल दी। 7 विकेट्स इन द गेम बिटवीन द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। तो आप कह सकते हैं आज लेफ्ट वाज एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दैट यंग किड टू कम एंड बोल। एंड हर बारी जब वो विकेट निकाल रहे थे ना, तो वो बच्चा वो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ देख रहा था, एंड महेंद्र सिंह धोनी उनको बता रहे थे कि ये लाइन डालें, एंड ही जस्ट केप्ट डूइंग दैट। तो वो 3 विकेटें 19 रन देके और 3 ओवर डाले। और मजे की बात आप नीचे देखिए, 12 डॉट बॉल है, 3 ओवर में से 2 मेडन ओवर, 12 डॉट बॉल है। लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी की सोच है। बहुत से लोग कहेंगे कि उनके 4 ओवर क्यों नहीं खत्म कराए, क्या वहां पे गलती होगी? क्योंकि एक बॉलर जो अच्छी स्पेल में था, अच्छे लय में डाल रहा था, क्या उसी टाइम नहीं खत्म करा देना चाहिए था? जिस तरीके से वो हमेशा दीपक चहर को यूज करते हैं, आज मेरे लिए इन्होंने तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अनबिलीवेबल स्पेल था। बट मुझे लगता है आज चेन्नई की टीम एक्चुअली दे गॉट दैट गेट आउट ऑफ जेल कार्ड, क्योंकि इतने छोटे मुकाबले में 4 कैच छोड़ने के बाद करिश्मा फिर मुकाबला जीतना ना बहुत बड़ी चीज होती है इस प्रतियोगिता में, इस लीग में। क्योंकि ये एक ऐसी टीम है, अगर आप एक हल्की सी गलती करते हैं ना, तो आपको बहुत सी टीमें वापसी करने का मौका नहीं आपको मिलता। Well, great ball to clean up Ishan as well. 5 missed chances in total, unfortunately, by Chennai as well. Yeah. So let's talk about that briefly, and we will be talking about our social tracker also very soon. So let's talk about that. Great ball to clean up Ishan as well. 5 missed chances in total, which is quite a lot by Chennai, no? Yes, I think so. I think जैसे Nikhil absolutely put it right, they actually got out of the jail. To be honest, dropping 4 or 5 catches, making so many mistakes, but still coming out and winning the game. Partly, I would say because of MSD. If anybody else, like I spoke, कि अगर कोई और होता, no matter who's there, बहुत मुश्किल होता उनके लिए. But I feel that MI have played really good cricket, if I can speak so. पावर प्ले में आपके 3 विकेट चले जाना और उसके बाद still putting up a decent score, 155, still a decent score, and make a game out of it and take it to the last ball. I think Mumbai has ticked a lot of boxes, but hats off to MSD and hats off to CSK to pull it through. Yeah, indeed. करिश्मा वो कहते हैं ना
कि भैया का आज गेंद में क्या सरसों का तेल लगाए थे क्या, ससरी हाथ में नहीं आ रही थी, बार बार छूटे जा रही थी. You're also on a roll today, Nikhil. It's not only Chennai, you're also on a roll. Throwing. Let's talk about Raidu. Raidu came in today 16-2 and really showed his experience with a really handy knock. Let's talk about Raidu because he's definitely somebody that we all paid attention to today, right? Wasim? I think he played really well. I think जो छोटा सा cameo था, obviously he didn't play a big now, but getting that 40 literally of 114 का strike rate, so that is not a massive strike rate, but वो situation में I feel you needed that kind of a knock. कि एक आपका जो player है वो batting करे 14-15 ओवर तक आपको मैच में deep ले जाए, and then you know कि you've got Pretorius, you've got Shivam Dube and MS Dhoni and even Bravo. जो बाद में आके मार सकते इवन रविंद्र जडेजा, so that knock was very very critical from CSK's point of view. वो जो पार्टनरशिप थी उत्तपा के साथ में रायडू की, I think that was थोड़ा सा एक स्टेबल बेस उनको बना के दिया. They lost the first wicket in the first ball, so sometimes it can be a tricky chase, but I think Raidu's experience showed there. He absorbed that pressure. जो रायली मेरिट अच्छी स्पीड में डाल रहे थे, he absorbed that pressure and then took it through till the things got a little bit easier, and then the big man finished it off. He did indeed. Let's take a look. हमारी social दुनिया में क्या हो रहा है? Let's take a look at the social tracker powered by Sky247.net. Let's take a look. And let's take a look at the first tweet, which is literally the art and the artist. I quite like that actually. I'm liking these memes that people make. MS Dhoni was spotted setting the trap for Kieran Pollard. He may not be the captain. The Mukesh from the yellow cam had the MI batters under trouble, isn't it? Other Mukesh. These are very cute. Do we have any more tweets or anything else on the social tracker? Right, last but not least, what a find Tilak Verma has been for MI, has batted to the demands of the situation in almost every match except for the LSG game where he could have batted a little faster. And for someone halfway into their debut, an average of, well, you can see the averages over there. So that is quite interesting from our social tracker. Let's now talk about, so that was our social tracker. Let's talk about Verma. Let's talk about his composure from Wasim. I think Karishma, he's been a find of the tournament for MI, I would say. Somebody who's playing for the first time, somebody who's never played IPL, somebody they scouted and unko अच्छे खासे bid में लिया, and he's been quite consistent and very impressive batting at that critical number, at sometimes at number 4, sometimes at number 5. He's got 250s, he's got 30s, couple of times, couple of 20s. So he has been consistent. He is one of those guys who's in the top 5 of the run getters. And कोई एक नए लड़के को आप देखते हो कि जो top 5 के अंदर रन बना रहा है, that is quite impressive. So I feel he's been a find for Mumbai Indians for sure, क्योंकि वो जो कंपोजर उन्होंने दिखाया है, इन क्रिटिकल कंडीशन में आपके रोहित रन नहीं बना रहे, ईशान रन नहीं बना रहे, पोलार्ड hasn't been firing, so him and Surya Kumar Yadav are the only ones जो रन बना रहे, and that has been a bright spot for Mumbai Indians. Absolutely, consistency and maturity at such a young age, played different kind of innings today for sure. Now we have to talk about our game that will be happening tomorrow, which will be a very, very interesting game. Let's just take a look at our game tomorrow, shall we? Or let's see if we're going to take a look at the numbers tracker. I think now it's time for the numbers tracker to see where the teams... Let's see. There we go, Nikhil. If you can take us through this, please. This is our points table. मुंबई के लिए अब राह जो है ना वो अब मुश्किल होती चली गई है. अब तो मतलब अगले 7 में से 7 भी जीते तो 14 अंक हो जाएंगे. बहुत मुश्किल कार्य हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनका मनोबल भी वो टूटता नजर आ रहा है. लेकिन चेन्नई के लिए गाड़ी पटरी पे आ रही है. जब आप ऐसे क्लोज गेम्स जीतते हैं, अभी 4 अंक है, अगर लगातार आप 3-4 मुकाबले जीते चले जाते हैं तो आपका वो मनोबल बढ़ता है. बाकी टीमें आपसे थोड़ा सा वो डरने लगती हैं, तो वो थोड़ा सा मोमेंटम आपको बतौर टीम मिलता है, which is a good sign.
लेकिन दो नई टीमें जो इस सीजन बहुत बढ़िया कर रही है, वो आपकी गुजरात की टीम है, लखनऊ की टीम है। वो पॉइंट्स टेबल पे अच्छा कारनामा कर रहे हैं, मजबूत टीमें नजर आ रही है। चेन्नई जैसी टीम मुकाबले शुरुआत में हारने के बाद वो मुकाबला बेंगलोर के खिलाफ जीते, आज रात को वो अंतिम ओवर में अंतिम गेंद पे जीते, तो ये सब चीजें आपको कॉन्फिडेंस में बढ़ावा देती हैं। तो आने वाले मुकाबलों में यू नो you'd be a much more confident side going into the next game as well. उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो हर रोज आप अगले मुकाबले में कुछ बेहतर करने को देखेंगे, चाहे आप फील्डिंग में बेहतर कर लें। ये आप मन बना के जाइए कि इस बारी हमने पूरी कोशिश करनी है, हम एक भी कैच नहीं छोड़ेंगे, एक अच्छा हाफ चांस को कन्वर्ट करेंगे, विल ट्राई एंड डू दैट। 2 रन बचाने को देखेंगे फील्ड में, कहाँ गलती हुई उसको हम उसमें सुधार करने को देखेंगे। दैट्स हाउ you build on these successful run chases and you try and take that confidence from these sort of games as well, और वही मुझे लगता है चेन्नई करने को भी देखेगी। Absolutely, absolutely. चलो हम बात करते हैं कल की गेम के बारे में. It's Delhi taking on Rajasthan. Clash between two teams filled with power hitters. Before I let both of you gentlemen go, let's have a few words about both of these teams. Waseem, let's quickly have a quick thought on the two teams playing tomorrow, Delhi and Rajasthan. आई थिंक करिश्मा बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. मुझे लगता है बहुत इवनली कॉन्टेस्टेड गेम होगा. दोनों टीम आई वुड से एट पार. दे बॉलिंग, दे बैटिंग. Rajasthan, if I can talk, they haven't won any game chasing the total. So वो उनके दिमाग में होगा कि if they win the toss, do they want to chase or they want to bat first? Because all the games they have won batting first. So something that suits them. They score, in excess of 180, 190, 200, and they defend because they've got such a strong bowling lineup. So might as well bat first and bat without any pressure and put up a decent score and defend it. Whereas Delhi, I don't think they mind chasing. To be honest, they've done well. They've got a decent bowling attack with Kuldeep Yadav doing well. They've got such a strong opening partnership, Warner and Shaw. Rishabh needs to come good, but I think this is going to be a fantastic game. Both evenly matched game hone wala hai. So looking forward to tomorrow's game. Bilkul, and Delhi showed good mental strength dealing with that COVID scare, right, Nikhil? जी, बड़ा फर्क आया। देखिए, आप क्वारंटीन में थे, अभ्यास का समय नहीं मिला, उसके बावजूद आप वो विजुअलाइजेशन, आप गेम के बारे में सोच रहे थे कि आपने हर खिलाड़ी के खिलाफ क्या योजना बनाई है, उसके ऊपर आप अमल करने को देख रहे हैं। सो यू केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, तो उनको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर मिलेगा। लेकिन करिश्मा, आपके लिए बोलता हूँ, हम बात क्या कर रहे हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट। आप मुझे बताए, आपको गोलगप्पे खाने का मजा आता है कि नहीं, ये बताए। Of course, बिल्कुल। तो कल का मुकाबला ऐसा ही होगा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, लेकिन थोड़ा तीखा भी। दोनों कड़ाकेदार टीम है। Nikhil, what have you had for dinner? Because he's on a roll. आपने क्या पिया है? He's on a roll, which is great. I love it. Yeah. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much for joining me, and thank you to our viewers for logging in. हम कल फिर मिलेंगे at 6:30 p.m. IST on Sky247.net presents Not Just Cricket. Thank you so much, and let the games begin tomorrow. See you both tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Good.